I hope you all are very good. Now students, today we will start our English grammar chapter 5. The name of the chapter is one and many. When we see a single things, we say it is one, and when we say more than one, we say many. For example, you see, I have a sketch pen. I have a sketch pen. मेरे पास एक sketch pen है. If I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 sketch pens. So we use pens. For a single sketch pen, we use pen, and when we change it in the many, we use s. So we say sketch pens. Okay student, in this chapter we discuss about one and many. We are also says that one is as a singular noun and many we call plural nouns. For a single pen we say that it is a singular noun, and for many pens we say that they are plural noun. Now students, let's start this chapter. Today we are doing one and many. Chapter number 5 of English B, one and many. Students, we already know what are one and many. What is the difference between one and many? One means only one. For example, this is a picture of a star. It is only one star. एंड मैनी मीन्स टू और मोर, कि दो और दो से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं मैनी. लाइक 1, 2, 3, देयर आर 3 स्टार्स. इट इज़ मोर देन 2, सो वी कॉल इट मैनी. व्हेन वी सी ओनली वन, वी से ओनली वन. एंड मैनी व्हेन देयर आर 2 और मोर थिंग्स, दैट इज कॉल्ड मैनी. वी ऑल्सो सेज वन एज अ सिंगुलर नाउन. वन नेमिंग वर्ड, कि हम जो वन है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, एंड जो मैनी होता है वी से मैनी एज अ प्लूरल. मैनी को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल. वन डिनोट वन नेमिंग वर्ड, इसमें सिर्फ एक नेमिंग वर्ड होता है, और एंड प्लूरल मोर देन वन नेमिंग वर्ड. प्लूरल्स में वन से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, box, there are only one box, only one. And when we write boxes, there are many boxes. It may be 2, 3, 4 and so on. So student, the main difference of the one and many is one denote only one things and many denote two or more things. We call it singular and plural. Students, in this chapter you have to change the singular noun into plural and plural to singular. So when we do singular to plural, when we change singular noun to plural noun, we uses s, es, ies, ves, like that. So student, uses of s to change singular to plural, कि एस का यूज़ हमें कैसे करना है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, बॉय बॉयज़, वी पुट एस. बुक बुक्स, बुक बुक्स. नाउ फर्स्टली लुक एट द बुक वन एंड मैनी. स्टूडेंट, यू हैव टू कलर द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन नंबर, कि आपको उन चीज़ों को कलर करना जो ओनली वन है, नंबर में ओनली वन है. लाइक apple is only one, so you have to color the apple. Stars are 4, you don't color the star because they are many. And next there are 2 balloons and there is 1 dog, you have to color only 1 dog. Okay beta. Now circle the group of words that describe these pictures, कि group of words को आपको सर्कल करना है जो इन पिक्चर्स में दिखाई गई हैं. जैसे मैनी एप्पल, देयर इज ओनली वन एप्पल, सो यू सर्कल वन एप्पल. 4 स्टार्स,
या 1 star, that is 4 stars. 2 balloons, 1 balloons, that is 2 balloons. Many dogs, 1 dog, 1 dog. We have learnt that we can add s to show that there is more than one noun. कि अगर हमें नाउन को एक से ज़्यादा बनाना, मैनी में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें s यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, many apples and many stars. In our last example, we say many apples, many stars. Singular noun. When there is only one of a naming word, it is to be singular noun. And when shows more than one, it is our plural noun. Now in s, you have to add s to change from the singular to plural. Flowers, flowers. You put s. Pineapple, pine, apples. Student, you have to do this practice. You have only put s. Okay. Now student, when we use es to make singular to plural, where we use es, noun ending with, जब भी कोई noun end करता है s, ch, sh, x and o, we put es. For example, gas, it end with s, so we use es, gases. Church, it end with ch, we put es, churches. Now gas, gases. Fox, foxes. आपको ऐसे फील करनी है. Now the use of ves, कि हम जब सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते हैं तो हम ves का यूज़ कहाँ करते हैं? नाउन एंडिंग विद, जब नाउन fe या f से एंड होता है तब हम ves का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ, इट एंड विद fe, so we put ves, lives. Loaf, it end with f, loaf, तो हम कैसे चेंज करेंगे? loaves. One things you have to remember, remove fe और f, use ves. जब आप ves का यूज़ करते हो तो आपको जो fe और f है उसको हटा देना है. Now student, wolf, it end with f, so we put volves. We remove f to make singular to plural, ves. Loaf, loaves, loaves. Leaf, leaves, क्योंकि यहाँ पे 2 leaves हैं. Elf, elves, elves. We remove f and put ves. Now we learn use of ies when a noun ending with y, कि जब भी कोई नाउन y से एंड होगा तो हम क्या लिखेंगे? फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, we remove y and write ies, families. Fly, we remove y and we write flies, flies. Remember that remove y and use ies, कि जब भी हम y को हटाएंगे तब हम ies यूज़ करेंगे. It is compulsory to remove y. Now write the plural forms of these words. तो आपको इनकी प्लूरल फॉर्म दिखते हैं. There is last word is y. So student, you have to write like that, BAB. You remove y and write IES, babies. Body, like BODIES. Student, you have to remove y, okay, and put IES. You have to do this practice, okay. Student, learn some nouns do not follow any of spelling rules when they form their plural. लेकिन कुछ ऐसे nouns होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते. रीड दिस लिस्ट केयरफुली. इस लिस्ट को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि जो रूल है वो फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड,
children, goose, geese, mouse, mice, sheep, sheep, deer, deer, ox, oxen, woman, woman, men, men, tooth, teeth, foot, feet. बेटा ये वो नाउन्स हैं जो स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल शीप रिमेन शीप, डियर रिमेन डियर. ओके. In each of these sentences an incorrect form of the noun has been used. कि ये sentences दिए गए हैं, इनमें incorrect form of noun की यूज़ की गई है. Write the correct form of the noun in the blanks. आपको blanks में इसकी correct form लिखनी है. First is all the men in the street were dressed in colorful clothes. Men's. No, we put all the men. men. The lady is giving sweets to the two boy. Two है बेटा, तो there are boys. They are boys. My friend ate 3 peas. Peas means we put it into plural noun. Pieces. Pieces. There are many girls in the school. There are many girls. Rajiv missed many classes. My hobbies are singing and dancing. आपको प्लूरल में चेंज करना है. My hobbies. Handkerchief. तो आप क्या लिखोगे? Hand. Why did you buy so many handkerchiefs? Handkerchief. F को रिमूव करके आप पुट करोगे VES. VES. There were many ducks in the pond. There were many ducks. So student, it is your back exercise. Students, you have to revise this exercise. Okay. So student, I hope you all are understand this chapter. You have to learn about one and many, more and more. And student, you have to practice of one and more. Thank you. Have a nice day.